All of them are enshrined within the coding itself. And it is up to us to guide what to do with these ideals. So I'm going to give a few examples. Earlier you saw on the presentation an example of few receipts of what is happening with the Indian farmers. And I'm going to give you 4 examples of blockchain implementation within supply chain and how transparency has empowered the last mile delivery and the last person on the ground. So in agriculture, what we can do. So with that, I'd like to conclude and we'll soon begin our panel discussion with our esteemed panelists. District of Maharashtra. We are well known as the jackfruit king of India. We are basically farmers who are working in the rural places in a small village of Maharashtra. I'll tell a little bit about our story. That we are the first farmer who has done and collected. We work like a research station. There are about 128 varieties of jackfruit from all over the world. It's a global food and it is a main prominently denoted crop in Global Food Hunger Index. So we are working in this crop since last 12 years in this, and for the blockchain and for the traceability, why it is important for the farmers, as Gaurav showed is in this first slide, that the farmers are actually getting very less amount of money, the traders are getting maximum amount of money through processes in our factories and then going to close to 40 countries of Europe. And when it is placed in the market, I am supposed to tell rubber belongs to which field, and that field has complied with the local regulations. Blockchain handled it quite seamlessly. I also feel that blockchain is something sort of a hallmarking of data. When blockchain is there, there's no iota of doubt around the integrity of the data and how it is seamlessly integrated in the entire heavy investment in technology. The technology transformation is taking place, be it pharma, be it manufacturing, be it logistics, be it space science, and we have been hearing all this yesterday and today on the NXT panel. Got in touch with me on LinkedIn and he said, can you help me with blockchain? We bought these mobile phones and we want to give them to the tribal families so that we can get their government benefits to them, and I want to learn how to do it. And so we chatted over LinkedIn for a while, and I went, I have to go to Chhattisgarh. I have to see the people with this ambition to connect those tribal families to the modern economy. And that was where my journey with India started. But at that time, blockchain is so much more even than the supply chain, helping. Very good morning to everyone. Let me start by telling you that 1 month back I had an absolute miraculous experience. That was to go to the Mahakumbh. I'm sure many of you have also been there, because this is the largest gathering of people ever in human history. There's been nothing like this in Europe, America, or China, anywhere else. Absolutely unique. Never ever so many people come together at one point for any event. And this is, of course, to tap into the age-old history of India. The Kumbh is relatively new from historical perspective, but the dip in the Ganga is age-old. And seeing all these devotees from small towns and villages from all over India see the happiness in their face and how well organized it was. Clean and very well organized for tens upon tens of millions of people.
chief guest for NXT 2025. Once again, a quick request, those who are still standing,
could we please have once again a loud round of applause for our honorable chief guest. और अब वो वक्त आ चुका है मैं indebted for his luminous presence. The edifice, which is today's conclave, would have. Ladies and gentlemen, it is an honor for me to welcome you all on behalf of NXT and NewsX World family, where we are not only rooted in the ethos of true, independent, inclusive journalism, but also envisioned to facilitate a dialogue-rich platform for the global change makers across fields. Speaking of change makers, sir, over the last 10 years, under your visionary leadership, Bharat has not just seen development. We have witnessed a transformational journey. From being the world's fastest growing economy to becoming a nation known for innovation, infrastructure, inclusivity and resilience. Every step we have taken has been guided by a bold idea of Viksit Bharat by 2047, something never envisioned by anyone earlier. It is with this zeal that we have launched NXT, a platform that stands apart in its concept and ambition. NXT is not just an event. It is a bold step towards creating a global, collaborative ecosystem where thought leaders, thinkers, innovators, entrepreneurs, and policymakers from all across the world come together to shape the future. Inspired by the spirit of the World Fair, Next provides a stage to showcasing cutting-edge technologies, breakthrough innovations, and bold ideas that will define the next era of human progress. It is not merely a conclave or a conference. It is designed to catalyze action through collaborative initiatives and other projects. NXT ensures that the conversations held here lead to tangible impact on critical global challenges, from climate change and water security to AI governance, health innovation, space exploration, and quantum breakthroughs, which are necessary to be addressed for the global welfare. NXT also aims to foster a sense of shared purpose, truly embracing our Vedic philosophy of one world, one family, where the nations, organizations, and individuals work not in competition, but in collaboration for the common good of humanity. With a focus on inclusivity and innovation, NXT's vision aligns perfectly with your mission of Vishwamitra Bharat, where Bharat plays a leading role in solving global challenges and shaping the future of the world. Pradhan Mantri ji, a famous line from a movie, Star Wars, is etched in my mind. It said, to boldly go where no man has gone before. Under your leadership, when our Chandrayaan landed on the lunar South Pole, we proudly announced that Bharat is ready, and boldly so, to go where no one has gone before. Pradhan Mantri ji, you would be happy to know that over the course of our sessions, we have hosted renowned physicists, futurists, astronauts. बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी, नेटवर्क की पूरी टीम, देश विदेश से आए सभी अतिथि, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, न्यूज एक्स वर्ल्ड इसकी शुभ शुरुआत, और इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ग्लोबल हो रहे हैं और आज कई फेलोशिप्स
और स्कॉलरशिप की भी शुरुआत हुई है। मैं इन कार्यक्रमों के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मैं पहले भी मीडिया के इस तरह के कार्यक्रमों में जाता रहा हूं, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि आपने एक नया ट्रेंड सेट किया है। और मैं इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे देश में मीडिया के इस तरह के इवेंट्स होते रहते हैं और एक परंपरा भी चल रही है, उसमें कुछ आर्थिक विषय भी है, हर एक का फायदे का मामला रहता है जरा। लेकिन आपके नेटवर्क ने इसे एक नया डायमेंशन दिया है। आपने लीग से हटकर एक नए मॉडल पर काम किया है। मुझे याद है, अगर मैं पहले की समिट और आपके समिट के संबंध में जो कल से सुन रहा हूं, पहले जो समिट अलग अलग मीडिया हाउस ने किए हैं वो नेता सेंट्रिक रही है। मुझे खुशी है ये नीति सेंट्रिक है। यहां नीतियों की चर्चा हो रही है। ज्यादातर इवेंट जो हुए हैं वे बीते हुए कल के आधार पर वर्तमान की नुक्तेचीनी वाले रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि आपका ये समिट आने वाली कल को समर्पित है। मैं देखता था कि पहले जितने भी ऐसे कार्यक्रमों को मैंने दूर से देखा या खुद हुआ गया, वहां विवाद का महत्व ज्यादा था, यहां संवाद का महत्व ज्यादा है। और मुझे पक्का विश्वास है। और दूसरा, जितने भी मैं इवेंट्स में गया हूं, एक छोटे से कमरे में होते हैं और अपने अपने लोग होते हैं। यहां इतने विशाल समारोह को देखना, और वो भी एक मीडिया हाउस के समारोह को, और जीवन के सभी क्षेत्रों को स्पर्श किए हुए लोग यहां होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हो सकता है यहां से और मीडिया वालों को कोई मसाला नहीं मिलेगा, लेकिन देश को भरपूर प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि यहाँ हर व्यक्ति के विचार देश को प्रेरणा देने वाले विचार होंगे। उम्मीद है कि इस ट्रेंड को, इस टेम्पलेट को आने वाले दिनों में दूसरे मीडिया हाउस भी अपने तरीके से और इनोवेटिव बना करके कम से कम उस छोटे कमरे से बाहर निकले। साथियों, 21वीं सदी के भारत पर आज पूरी दुनिया की नजर है। दुनिया भर के लोग भारत आना चाहते हैं, भारत को जानना चाहते हैं। आज भारत दुनिया का वो देश है जहां पॉजिटिव न्यूज लगातार क्रिएट हो रही है। न्यूज मैन्युफैक्चर नहीं करना पड़ रहा है। जहां हर रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं।
तो वो हील इन इंडिया के बारे में पहले सोचे। किसी को शादी करनी हो तो वेड इन इंडिया पर पहले विचार करें। किसी को घूमना फिरना हो तो लिस्ट में सबसे ऊपर भारत को रखें। कोई कॉन्फ्रेंस करना चाहे, एग्जीबिशन लगाना चाहे तो सबसे पहले भारत आए। कोई कंसर्ट कराना चाहे तो सबसे पहले भारत को चुने। ये ताकत, ये पॉजिटिव एटीट्यूड हमें खुद में पैदा करना है। इसमें आपके नेटवर्क की, आपके चैनल की बड़ी भूमिका होगी। संभावनाएं अनंत है जब हमें अपने साहस और संकल्प से इन्हें हकीकत में बदलना है। साथियों, भारत अगले 25 वर्षों में विकसित भारत बनने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। आप भी एक मीडिया हाउस के रूप में खुद को वर्ल्ड स्टेज पर लेकर आए, ऐसा संकल्प लेकर के आगे बढ़े। मैं मानता हूं कि आप इसमें जरूर सफल होंगे। ITV नेटवर्क की पूरी टीम को मैं फिर एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और देश और दुनिया से जो पार्टिसिपेंट्स आए हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। उनके विचारों ने जरूर एक सकारात्मक सोच को बल दिया है। मैं इसके लिए भी, क्योंकि भारत का गौरव बढ़ता है तो हर भारतीय को आनंद होता है, गर्व होता है, और इसके लिए मैं उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नमस्कारम। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आज के मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि आज वो आए, NXT 2025 की शोभा बढ़ाई और न्यूज़ वर्ल्ड को लॉन्च भी किया। आपने आज हमें मार्गदर्शन दिया और हमारे मेहमानों को प्रेरणा भी दी। बहुत बहुत शुक्रिया। Continuing the NXT 2025 summit here happening in New Delhi. We've of course got a lot of inspiration from our chief guest, Prime Minister of India's session just now. But now I urge everyone in the audience to please settle down. Please settle down. We are going to be moving forward to our next session very, very shortly. Everyone, please settle down. I request all of you to please vacate the front area. Please vacate the front area and take your seats once. Niels Bohr finally responded and said, "Einstein, stop telling God what to do." What he meant by that is, physics is not in the business of making us feel good. Physics is not in the business of trying to align with our intuition. Physics is in the business of trying to understand the natural world. And if the experiments are showing you that the micro world does not behave like the macro world, then you have to take those experiments seriously. And if the human brain is able, through analysis, to work out the patterns in the micro world and encapsulate them with mathematical equations,
as Heisenberg and Schrödinger did, you have to take these ideas seriously. Now, the wonderful thing is the fact that you all have a personal computer, the fact that you all have all manner of technology that makes use of the integrated circuit. None of that would exist were it not for quantum physics, because those tiny circuits involve manipulating the motion of little particles like electrons and making them go through